Yes, welcome all in this class. 3 units: power flow analysis, short circuit analysis, and state estimation has been over. This is the last unit on security analysis. In the load flow analysis, we know they give the steady state analysis that at normal running condition, what are the various system states, what are the values of P, what is the value of Q, V, delta, power flows, what are these values at normal operation of the system. That is called the load flow study. So we study that load flow analysis. We study the short circuit analysis during the fault. What is the fault current and what is the fault voltages. This is in the and in this analysis, security analysis, we see whether even after the fault, how to design the system that even after the fault, system may be in working condition. Normally what happens when the fault occurs, with the help of circuit breaker, we open that faulty portion. Fault may be in the line, fault may be the generating station generators, fault may be in the transformer. Wherever there is a fault, we will try to remove that portion. But when the fault occurs and when that system is removed, it may take some time. Suppose even if it takes say millisecond or half second, even if take the half second, then during half second whether the system will be running or not, or up to what time, if the fault is not clear, the system will continuously to be run, whether permanently or for that duration, that minimum period of half second, 1 second, or permanently, whether it is possible to run the system in spite of the fault. We should not always call it as a fault. There can be other type of situations such as the overloading may be there, some overloading of the line, some overloading of the transformer, tape changing may be changed. So in some unwanted situation, whether system is able to run or not, whether it affect the whole system or how much it will affect, that study is done in the security analysis. So that's why power system security analysis practices designed to keep the system operating when the components fail. Means some of the component, if they fail, even then the system, whether it is in a position to work or not. So then there were, as I told, there can be two type of transmission line damage, or there can be overloading somewhere, or there can be generator unit failure. And if one of the generator is either failure or taken off from the line, transmission line, because of the overloading, otherwise if it is taken from the line with the help of relays and circuit breaker, then in that situation what will happen if, say, out of 10 generator, one generator, because of some auxiliary failure or any other failure, if one generator is removed from the system, then what will happen, what it will cause? Out of 10 generator, if one generator is removed, then how the demand will be fulfilled? Total demand, suppose it is a 10 100 mega, suppose it is a 10 megawatt and 10 megawatt, and there are 10 generators. If one generator fails, then what will happen? The total demand is same, so same demand is to be filled by the 9 generator. It means the other generator will be supplying more power. Whether in that situation, whether the system will continuously to run, whether it will be running optimally or not, or whether it will be some stability problem will come, some other type of problem may come. That similarly the transmission line, if one of the transmission line because of any fault is removed, then the power MVA which was flowing through that particular transmission line will be diverted to other lines. So in that case, some of the line may be overloaded. In that situation, whether system will be working or not. So it means by maintaining the proper amount of spinning reserves in the kahan pe reserve, spinning reserve in the generators, the remaining unit on the system can take the deficit
otherwise low frequency may take place. तो हम तो एक तो ये है विद और विदाउट द लो फ्रीक्वेंसी और विदाउट द नीड टू शेड द लोड, या तो हम लोड शेडिंग करके कंपनसेट कर सकते हैं या लो फ्रीक्वेंसी पे सिस्टम चला सकते हैं. सो व्हाट इज टू बी डन, दिस ऑल एवरीथिंग इज टू बी स्टडीड इन द security analysis, because if we don't take care of the any failure, then what will happen, it will a cascade failure will take place. Suppose if one generator is removed from the system or is taken out from the system because of some fault, then what will happen, the load on the other generator will increase. And if those generator because of overloading are not able to, or out of those remaining generators, if anyone is not able to cope up the higher load which has been shifted because of the failure of one, then that will also be going out of system. Means उस पर ओवरलोडिंग हो गई, मीन्स 9th वाला सपोज करिए 10th पे फॉल्ट आ गया था, उसको रिमूव कर दिया, उसकी वजह से सपोज करिए 8th ओवरलोडिंग हो रहा, तो 8th भी आउट हो जाएगा. जब 8th आउट होगा तो उसका लोड दूसरे जनरेटर्स पे जाएगा, देन सपोज सेकंड इज आउट. So in this way a cascade failure will take place. If you don't take care the system, then a cascade failure will take place, which is called the complete blackout of the system. So to avoid the complete blackout of the system, we have to design the system in such a way that even some failure take place. Means we have to design our system in such a way so that up to what extent, what type of failure, what type of removal of the line and generator, our system will be able to work continuously. It may happen that even we can design our system in such a way that if out of the 10 or out of total number of generator, one generator fails, even then the system will continuously to run. Or we can design further, we can design system that out of 10 or out of total n, even if two generator fails, then the system will be able to work. So it is our it is us who have to design, and that is called the security analysis. कितना secure system हम डिजाइन करना चाहते हैं, accordingly design is to be done. Now, so while when we study the security analysis, we divide the system into the three parts. One is the system monitoring. First of all, we have to monitor the system. When we call it as a monitor, what is the meaning of monitoring? Our whole power system is a very complex and big enough, spread over the large geographical area. In that case, we know that data is collected from far away. That data is collected from far away through the telemetry from different substations, different equipment, transformer, transmission line, and collected at the control center, that is called the master terminal unit. Data is collected, and this telemetry data, when it is collected, it is monitored with the help of server or through the screen, and then the action is taken. This process, data, telemetry of the data, collection of the data, telemetry of the data, then appropriate decision with the help of supervisor, it is called as the supervisory control and data acquisition system. State estimation and telemetry, this everything, the both as a total is called as a SCADA system. So one, for the security analysis, first of all, we have to completely monitor the system through the SCADA. Second thing is the contingency analysis. We have to design the system in such a way that even if some fault occurs, or depending upon one or two generator is failure, or one or two transmission line is failure, or one or two transformer is failure, even then system is able to work or not. Third is the security constant, that in spite of doing this, it may happen that our system may not be optimum power. Normally what happens, in normal condition, we know, we studied also the optimum power flow. Optimum power flow means economic dispatch. Our dispatch is such that, dispatch means total demand is met from different generator in such a way that overall cost is optimized. That is called the economic dispatch. So generators, the dispatch is done, sharing of the generation is done in such way. This is called the optimum power flow. But keeping in mind the security constraint, if we do the optimum power flow, then it is called the security constraint optimum power flow. So means the system should work even there is some fault, then
we can say it is a then it is called as a security constrained optimum power flow. Let us understand these terminology. State estimation, we understand that telemetry system along with the state estimation, the total is called the supervisory control data acquisition system. One by one, just we are taking. Second major security function was the first was the SCADA, second was the contingency analysis. As I told, what is the contingency analysis? That if the system is in trouble, even then system is operating or not, and up to what amount of overloading, what amount of out of limit, if any equipment is going. And third was the optimum power flow with security constant. So this, let us understand this one by. This is to be understood. As I told, to understand all the above function, we have to understand the operating states of the power system. So these are the operating states. Optimal dispatch, we know. Do you understand what is the optimal dispatch? वीरेश, ऑप्टिमल डिस्पैच पता है क्या होता है? आर यू लिसनिंग मी? वीरेश, चेतना, धीरज, सुन पा रहे हैं? धीरज, so only 4 are there. क्या हुआ? इतने लोग कहाँ गायब हो गए? What happened? Only total 7 are present. अभी जो आपकी स्ट्रेंथ टोटल हो गई थी, अब 7 रह गई. What is the issue? उसमें ये 4 PhD के ही हो गए. So Brajesh, Dheeraj and Narveer, only 3 are present from MTech. Brajesh, are you listening me? Yes sir. क्या स्थिति है फिर क्लास की आपकी? सर पता नहीं सर. ऐसे कैसे चलेगा वही काम? चलो, anyway, optimal dispatch, we know it is economic dispatch. Economic dispatch means suppose total demand is 100 megawatt, then how it will be shared from different generators so that overall cost is minimized. It is called the optimal dispatch. So such type of operation in normal running condition, we do the optimal dispatch. Then one is the post contingency analysis. Contingency analysis means if the state of the power system, post contingency, it is the state of the power system after the contingency has occurred. Contingency has occurred means some fault or some overloading has taken place, or some generator or transmission line is out of from the system. So this state has a secured violation of transmission line or transformer outside its flow limit. मतलब क्या होगा? अगर सपोज एक ट्रांसफार्मर आउट हो गया, तो देयर मे हैपन दैट सम ऑफ द लाइन इज ओवरलोडिंग, some of the bus voltage may be overloading. That is called the post contingency. And security dispatch means that whether system will be running after the contingency or not, secured way, whether it will be running in the secured way or not. Another thing is the secured, whether it is running secure post contingency, means it is running, but we have to design the system in such a way it is running just below the optimum power flow. जैसे क्या था, optimum power flow पर रन होने की बजाय slightly less than the optimum power flow. If it is running, we have to design in such a way that even if some generator failure take place, then system will be running optimally
optimally good but not equal to that one. So to understand this, we can take some example, then it will be more clear. Suppose our total demand is 1200 megawatt and there are two generators and there are two transmission line as shown in the figure. The transmission line capacity of these two lines are 250 megawatt. Okay, दो ट्रांसमिशन लाइन है, दिन की टोटल कैपेसिटी 250 मेगावाट है, मतलब इस पर 250 मेगावाट पावर फ्लो कर सकती है। और दो जनरेटर है जो 500 मेगावाट पावर सप्लाई कर रहा है, ये 700 कर रहा है, टू मीट द टोटल डिमांड ऑफ 1200 मेगावाट डिमांड है। ये 500 और 700 कहां से आया? ये आया इकोनॉमिक डिस्पैच से। हमने इकोनॉमिक डिस्पैच किया, पावर सिस्टम इकोनॉमिक डिस्पैच एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैच एनालिसिस किया और ये कहा टोटल 1200 डिमांड है। सपोज कंसीडरिंग द लॉसेस इक्वल टू 0, देन इट विल बी इकोनॉमिकल मतलब मिनिमम कॉस्ट पे मिल जाएगा। अगर ये 500 देता है और ये 700 देता है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट पर 1200 मिलने के लिए मिनिमम कॉस्ट पेमेंट के लिए 500 इससे लेंगे, 700 इससे लेंगे, 700 इससे लेंगे, then no problem, it will come from this bus. 500 since both the lines are same, so 250 will come from this megawatt, 250 will come from this megawatt. Okay, now 250 megawatt is coming from here, 250 megawatt coming from here, and the limit of this line, power carrying capacity limit of this line is say 400 megawatt. तो ये within 400 megawatt है, it is also within 400 megawatt. So system is running at optimal dispatch, no problem. It is the normal running condition. Now suppose some fault occurs. अब क्या हुआ, आपका इस लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया। अगर इस लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया तो क्या होगा, इस लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया तो व्हाट विल हैपन, दिस fault means this line will be open. When this line is opened, then you see this 500 megawatt will flow through this and 700 megawatt is flowing, because in place of this, otherwise the 250 was flowing through this is open, so this will coming through this line. Now the capacity of this transmission line is 400 megawatt, but because of this fault occurs in the first transmission line, the power flowing into this is 500 मेगावाट, सो इट इज ओवरलोडेड। तो पोस्ट कंटिजेंसी के बाद क्या हुआ, एक लाइन ओवरलोडेड हो गई। तो नो डाउट सम टाइम द ओवरलोडिंग हो सकता है, मींस द लाइन में बी इन द क्रिटिकल सिचुएशन, ओवरलोडिंग हो गई एंड इट इज सप्लाइंग। ओवरलोडिंग से क्या होगा, कुछ सैग हो जाएगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे, मींस ऑल्दो इट इज नॉट अलाउड बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट कैन बी allowed also. But so this is the post contingency situation. Now another situation may be such that, and we want to, such situation should not be arise at all. तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए ऑप्टिमम पावर फ्लो ये कह रहा था कि ये 500 यहां से जाएगा, 800 यहां से जाएगा, बताए। अब नाउ हमने क्या किया, सिक्योरिटी कंस्टेंट ऑप्टिमम पावर फ्लो। अब हमने दूसरा पावर फ्लो एनालिसिस किया, जो ऑप्टिमल डिस्पैच किया था, इकोनॉमिक डिस्पैच किया था, उसकी जगह हमने सिक्योरिटी कंस्टेंट मतलब सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऑप्टिमल पावर फ्लो किया, एक न्यू प्रोग्राम डेवलप किया। और न्यू प्रोग्राम वो ये ऐसा कह रहा है कि 700 की जगह इससे 800 लो, इससे 400 लो। तो this will not be as optimal as the previous one. उसमें इकोनॉमिक डिस्पैच में हम क्या करते थे, इकोनॉमिक डिस्पैच में क्या करते हैं, वीरेश कैन यू टेल, ब्रजेश आप बता पाएंगे? सर जो लोड को है ना वो मतलब इकोनॉमिकली डिवाइड कर देते हैं। इकोनॉमिकली डिस्पैच के लिए हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू 1, सबका इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। तो इसमें क्या किया, इसको सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट इकोनॉमिक डिस्पैच किया। इसमें हमने देखिए, इसमें ये इस प्रोग्राम के थ्रू ही पता लगा, इससे 800 मेगावाट लें, इससे 400 लें, तो इसमें ये उतना इकोनॉमिकल नहीं होगा। ओवरऑल कॉस्टिंग, ओवरऑल इससे हम ज्यादा ले रहे हैं जबकि पहले कम ले रहे थे, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओवरऑल अगर हम कॉस्ट निकालेंगे C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन उससे फायदा क्या, कॉस्ट बढ़ गई, इट इज नॉट दैट ऑप्टिमल इकोनॉमिकली एज द प्रीवियस वन, जब हमने 500 700 लिया था। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, जब इससे 400 लेंगे तो इस पे 200 जाएगा, इससे 200 मेगावाट जा रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, इफ वन ऑफ द लाइन
इज आउट ऑफ द सिस्टम, अगर किसी कारण से ये लाइन आउट ऑफ सिस्टम हो गया तो क्या होगा, ये 400 मेगावाट इससे जाएगा। जब 400 मेगावाट इससे जाएगा तो ये क्या होगा, इट विल नॉट बी ओवरलोडिंग, तो ये ओवरलोड नहीं होगी क्योंकि इसकी लिमिट ही 400 मेगावाट थी। तो क्या हुआ, हमारा सिस्टम ये सिक्योर डिस्पैच हो गया, मतलब इकोनॉमिक डिस्पैच की जगह इट इज ए सिक्योर डिस्पैच। इवन इफ सम लाइन इज out of system, then the system is secured and it is not as economical as the previous one, but it is a economical also. तो हमारा इस तरह का डिजाइन करते हैं कि अब नाउ क्वेश्चन इज क्या हमने डिजाइन के वक्त क्या या सिक्योर कंस्टेंट इकोनॉमिक पावर फ्लो जो एनालिसिस करते हैं तो उस समय हमें एक लाइन के लिए ध्यान रखना है या दो लाइन आउट हो जाए या एक जनरेटर आउट हो जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए कितने आउटेज के लिए हमारा सिस्टम सिक्योर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करते हैं। तो दिस such type of design is called the secured constant optimum power flow. Is this point clear or not? You see here, it is a secure post contingency analysis. Is this point clear or not? ये चीजें क्लियर हो गई क्या नहीं? yes sir. Yes, sir. तो फैक्टर अफेक्टिंग द पावर सिस्टम सिक्योरिटी, अब हम क्या करते हैं, our intention is to operate the system in such a way that power is delivered reliably means even if the fault occurs then the power should be delivered। तो हमारा क्या होगा, हमारा रिलायबिलिटी बढ़ गया। जो लोड सपोज हमारा इंडस्ट्रीज में या 10 जगह पर सप्लाई जा रहा था, सप्लाई सफर नहीं की, सप्लाई तो कंटिन्यूसली जा रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। मींस इफ अदर्स आर एबल टू पे, कुछ लोग या भाई हमें कंटिन्यूस और रिलायबल सप्लाई चाहिए, ऐसा नहीं है अभी मिल गई और फॉल्ट आ गई तो नहीं है, तो हमारा आपने लोड सेटिंग कर दिया, थोड़ा सा कॉस्टली मिल जाए लेकिन रिलायबिलिटी बनी रहे, हमेशा सिस्टम में पावर आती रहे। तो सच टाइप ऑफ डिजाइन कॉल्ड द सिक्योरिटी कंस्टेंट ऑप्टिमम पावर फ्लो डिजाइन। So then what is the contingency analysis? इसको लिए हम देखो क्या करते हैं। if you see this flow chart, देखिए set system model to initial condition, नॉर्मल लोड फ्लो जैसे नॉर्मल करते हैं, इनिशियल कंडीशन पे हमने सिस्टम रखा एंड सिमुलेट एन आउटेज ऑफ जनरेटर 1 यूजिंग द सिस्टम मॉडल। हमने कहा एक सिस्टम हमारा एक जनरेटर आउट ऑफ ith जनरेटर i इक्वल टू 1 और फर्स्ट जनरेटर यहाँ पे हो गया, फर्स्ट जनरेटर आउट हो गया, तो उससे हमारा कोई जनरेटर 1 सपोज फर्स्ट जनरेटर आउट हुआ तो कोई लाइन ओवरफ्लो हो रही है। अगर लाइन आउट ऑफ रेंज जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है तो डिस्प्ले द अलार्म। अगर नहीं हो रहा है तो देखते हैं कोई बस आउट ऑफ वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो डिस्प्ले कर देगा, नहीं जा रहा है तो वेदर इट इज ए लास्ट जनरेटर, अगर लास्ट नहीं है तो 1 2 3 हर एक जनरेटर को लेके देखता रहे। एक जनरेटर लेगा, देखेगा कोई लाइन ओवरफ्लो हुई, कोई बस वोल्टेज ओवरफ्लो हुआ, अगर हुआ तो इसको डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज सभी जनरेटर्स को एक एक करके यहाँ चेक कर लेगा। सेकंड, देन इट टेक्स द ट्रांसमिशन लाइन that simulate an outage of one line। पहले एक जनरेटर का आउटेज किया था, एक ट्रांसमिशन लाइन को आउट किया, i इक्वल टू 1 या l इक्वल टू 1, फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन को आउट किया, एक लाइन को आउट करेंगे तो उसमें से जो पावर फ्लो हो रही थी वो क्या होगा, दैट पावर फ्लो will shift to the other transmission line। तो if any of the transmission line because of this overflows or not, if yes then display the alarm, otherwise no। If any voltage because of the one of the line is outage is overflow, if the congested or additional line flow is there, then it will display, otherwise one by one other transmission line will be taken। If it is a last line then no problem, last line then end। So in this way we do contingency analysis, means एक एक जनरेटर लेकर सभी जनरेटर, अगर हमने सपोज ऐसा सिस्टम डिजाइन किया है एक जनरेटर आउटेज हो जाए तभी भी हमारा सिस्टम ओके बना रहे, नॉर्मल रनिंग बना रहे, तो एक कौन सा, कोई भी एक हो सकता है, 1 2 सभी को करके हमारा डिजाइन ऐसा होगा, एक एक करके सबको देख लेंगे
और अगर एक जनरेटर के जाने पे भी हमारा सिस्टम ओवरलोडिंग नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं, उसका शिफ्टिंग, एक जनरेटर पर्टिकुलर जनरेटर हटाने से उसका कितना किस पे इफेक्ट पड़ेगा और कितना ओवरलोडिंग होगा। इफ ओवरलोडिंग होगा देन इट इज नॉट अलाउड, तो उतना then the design will be changed accordingly. So if it works for all the generators, then we can say for one generator outage, system will be securely operating continuously. Similarly, we will take one transmission line and one by one we check for, by remove one transmission line, then other transmission line, then other, one by one. Then we see whether system is running securely or not. By doing one transmission line out, then we can say for one transmission, and then for both. Then finally we can say for one generator outage and one transmission line outage, our system will be working securely. This is called the contingency analysis. We can do it for two transmission lines simultaneously, then system will be more secure, then it will be more uneconomical also. जैसे जैसे हम सिक्योरिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इकोनॉमिकली हमारा सिस्टम थोड़ा पुअर होता जाएगा। मीन्स वी हैव टू पे मोर ऑन द फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। सिक्योरिटी बढ़ाना है तो हमें उसका कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट पेमेंट इन टर्म्स ऑफ द इन अनइकोनॉमिकली रनिंग ऑफ द सिस्टम। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? सो ओनली हाउ मेनी? ओनली 5-6 students are present. 6-7 are present. Okay. Any question in this? No, sir. So this is about the theory of the security analysis. Then now in the next class we will take the detailed derivation. If one generator is removed, what will be its effect on the different transmission lines? अगर एक जनरेटर हटा दिया इसका इफेक्ट एक्चुअली में कितना पड़ेगा उसका लिए हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे. Then on the basis of that we will do the or similarly we will do, if one transmission line is removed, then what will be the effect on other transmission lines power flow. तो एक इस पर डेरिवेशन करेंगे, then we will take the numerical question, then the things will be more clear. Okay, so if you want to ask any question you can ask. सर ये अपलोड कर देंगे सर. हाँ अपलोड तो कर देंगे और कुछ